In this last part of this chapter, that is structural organization in animals, we'll be discussing about the different systems in case of frog. Now coming to the external morphology of frog. The scientific name of frog is Rana tigrina, as you are all aware, and it is cold-blooded. So what is the other term for cold-blooded? That is poikilothermic. Frog also, you must have seen that it has the ability to change its color and blend with the surroundings, that is called as camouflage, and to hide from the enemies. It also shows what we say as protective coloration, mimicry. That means its coloration is light green or olive green so that it blends with the surrounding grass, so it cannot be detected easily. Since it is cold-blooded, so therefore it undergoes summer sleep, that is called as estivation, and winter sleep that is called as hibernation. Now the morphology. You must have observed कि जो skin है frog का smooth है और slippery है, because it secretes mucus. And why there is mucus, as you must be aware कि इसमें skin acts as a respiratory organ, so it has to be moist for gases to dissolve into that and then enter the body. अब जो कलर है डॉर्सल साइड में वो क्या है, ऑलिव ग्रीन, और वेंट्रल साइड में है इट इज़ पेल येलो. और जो फ्रॉग है इट नेवर ड्रिंक्स वाटर, बट वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब होगा, थ्रू द स्किन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, सो नेक इज एब्सेंट, सो जस्ट टू पार्ट्स, दैट इज हेड एंड ट्रंक. अब जो हेड पे है उसमें एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं अबाउट द माउथ, और आईज यू विल सी बल्ज आउट, और उसमें एक कवरिंग होगा, दैट इज द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द आईज इन वाटर. और हम में भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, मगर एक वेस्टिजियल है एट द कॉर्नर्स ऑफ द आवर आईज. और हियरिंग, एक्सटर्नल ईयर तो है नहीं इसमें, तो इसमें कौन सा है, जस्ट द मेम्ब्रेनस टिम्पैनम जो है दैट इज यूज्ड फॉर हियरिंग. अब जो लिम्स है टेट्रापोडा में आ जाता है, इफ यू रिकॉल द क्लासिफिकेशन, तो इट हैज़ लिम्स जो किस लिए यूज होता है, फॉर स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग. अब 4 लिम्स में 4 डिजिट्स हैं, लेकिन हाइंड लिम्स मस्कुलर है, मगर उसमें कितने डिजिट्स है, 5 है. और फीट जो है उसमें वेब्ड है, सो दैट इट कैन स्विम इन वाटर. अब जो है फ्रॉग्स का, इट शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. उसका क्या मतलब है कि वी कैन डिफ्रेंशिएट द मेल फ्रॉग फ्रॉम द फीमेल. कैसे, क्या डिफरेंसेस है कि जो मेल फ्रॉग है, कभी ब्रीडिंग सीजन में यू हेयर क्रोकिंग साउंड्स जो फ्रॉग मेक करते हैं, वो कौन से फ्रॉग्स होंगे, मेल फ्रॉग. उसके लिए दे हैव द वोकल सैक्स. और मेल फ्रॉग्स में क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड है, कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 limbs for holding the females during copulation. Now coming to the alimentary system or the digestive system. तो alimentary canal short है because you know कि frog, what is the food of frog, that it feeds on the insects, so it is carnivorous. So the length of the intestine जो है reduced है, small है. So what you see here, the diagram of all the internal organs of the frog. तो माउथ तो बकल कैविटी में लीड करता है, सो इट हैज अ लार्ज बकल कैविटी, एंड दैट माउथ will lead into the buccal cavity, and then it's going to lead into the esophagus. So this is the esophagus through the pharynx. अब esophagus किस में लीड करता है, जैसे हम में है स्टमक में लीड करेगा. then you have the intestine here, फिर जाके रेक्टम है, और रेक्टम किस में फिर ओपन करता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोइका. अब क्लोइका इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या ओपन करता है, क्लोइका में क्या क्या ओपन करता है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है फ्रॉम द किडनीज है. तो ये सारे, दैट मीन्स द रेक्टम, एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग है, यूरेटर का ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग है, एक कॉमन सैक में ओपन करता है, दैट इज द क्लोइका. एंड यहाँ पे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट ऑपरेट्स इन द सेम वे एज इन केस ऑफ मैमल्स, कि स्टमक में इट इज विल बी गैस्ट्रिक जूस विल बी सिक्रेटेड, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन यहाँ पे होगा. इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस, सो दिस इज द लिवर हियर, दिस इज द गॉल ब्लैडर हियर, उसके पीछे ये लंग्स है, पिंकिश लंग्स है. सो दीज आर
the kidneys here, kidneys के साथ fat bodies associated है. From the kidneys the ureters are rising, as I said just now. It's going to open into the cloaca. अब जो intestine है, you can see it's highly coiled, एक watch spring की तरह है, एक membrane यहाँ पे attached होता है, holding it in this coiled position, जैसे कि यहाँ पे नज़र आता है. So since it is carnivorous, तो intestine छोटा होगा, but same process of digestion as it in man, कि पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट होगा, डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, बाइल सिक्रीट होगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. यू हैव द गॉल ब्लैडर हियर, यू हैव द लिवर हियर, सो दैट इज गोइंग टू emulsify the fats and excess. सारा complete digestion यहाँ पे होगा, absorption यहाँ पे होगा, and waste will be thrown out through the cloacal aperture. So in case of frog, anus नहीं है, so last वाला terminal aperture कौन सा होगा, opening कौन सा होगा, that will be the cloacal aperture. Normally in other animals we have seen कि elementary canal last opening क्या है, is the anus, but here it is not the anus, it's just the what we refer to as the cloacal aperture. So that's what we have written here, कि mouth is going to lead into the buccal cavity, फिर esophagus में through pharynx. Esophagus we said just now short tube है, that's going to open into the stomach, which will continue in the intestine, rectum, and finally बाहर open करेगा by the cloaca. So last opening क्या होगा, cloacal aperture. Digestive glands कौन से हैं, liver और pancreas, which secretes bile and pancreatic juice respectively. Now coming to the respiratory system. Respiratory system में क्या है कि frogs that you know live in water as well as on land, so they respire both on land and in water. अब water में respiratory organ कौन सा है, skin. So when frog respires through skin, what we call that as cutaneous respiration. लेकिन land में buccal cavity भी है, because it has lots of blood vessels, so the oxygen will also get, air will dissolve in it. Skin, cutaneous respiration, and when it respires through lungs, what we call as pulmonary respiration. So these are the respiratory organs of frog when it is on land: buccal cavity, skin, and lungs. Lungs, जो as we have seen previous slide में, pink colored sacs है liver के पीछे in the upper thorax. अब जो air जो enter करता है, so it has what is the mechanism of ventilation की air will enter through the nostril, जो हमने देखा है कि सर on the head is present, फिर जाके कहाँ में जाएगा, buccal cavity में. और buccal cavity में कैसे जाएगा, because the buccal cavity will be lowered. If it is lowered तो उसका atmospheric pressure कम होगा बाहर से, so air will enter through the nostrils into the buccal cavity. फिर जो ये external nares है, sorry, वो close होंगे और throat raise ऊपर जाएगा, raised up होगा, तो pressure increase होगा and air will be forced into lung. So this is what we say as positive pressure regulation. हम में क्या है, man में क्या है, negative pressure regulation. Negative pressure हम create करते हैं lung से में, जिसकी वजह से atmospheric air enters into our lungs. But here in this case, air in a way will be held in the buccal cavity, और फिर उसको external nares बंद होने से ये throat जब raise होगा तो pressure increase होगा and that air will be forced into lungs. So that is positive ventilation. Or estivation, during estivation, that is summer sleep, or hibernation, that is winter sleep में gases exchange will takes only through the skin. Coming to the circulatory system. अब जो blood vascular system is of closed type, जिसमें blood vessels हैं, जिसमें heart है, capillaries है, और it also has a lymphatic system. Heart अब जो है muscular है and it's located between the lungs, as we've seen in the previous slide. अब as usual जैसे human heart में है, it will be covered by pericardium. अब इसमें कितने chambers हैं? It has 2 auricles and 1 ventricle. So besides these 2 auricles and 1 ventricle, so we say it is 3-chambered heart. इसमें 2 other structures हैं which we call as sinus venosus and truncus arteriosus. तो यहाँ पे we can see that dorsal side of the heart, what this is depicting is a dorsal view of the heart. So on the dorsal side of the heart, what you have
is a triangular shaped structure that we call as sinus venosus. And this sinus venosus किससे बना होगा कि यहाँ से जो दो सुपीरियर वीना कावा है, यहाँ से एक सुपीरियर वीना कावा है, यहाँ से दूसरा सुपीरियर वीना कावा है जो कलेक्ट करेगा ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, और नीचे से inferior vena cava, they are going to fuse together and form what you say a triangular shaped structure on the dorsal surface of the heart that we call as the sinus venosus. So this sinus venosus will open where? Into the right auricle. So this is going to open into the right auricle, and the right auricle will receive deoxygenated blood from all parts of the body. And the pulmonary veins from the lungs will be opening into the left auricle. So दोनों auricles will open into a common ventricle through one aperture that is called as auriculoventricular aperture. और यहाँ से from this is a ventral view. From the right side of the ventricle से क्या arise होगा? एक bulbous structure. यहाँ पे जो ये नजर आता है bulbous structure, that we collectively refer to as truncus arteriosus. अब ट्रंकस आर्टेरियोसस में दो पार्ट्स है, एक बेसल पार्ट है जो नीचे वाला डिस्टल पार्ट है जहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व्स है दोनों एंड्स पे, यहाँ पे एक सेमिल्यूनर वाल्व है, यहाँ पे एक सेमिल्यूनर वाल्व्स है. दैट इज कॉल्ड एज कोनस आर्टेरियोसस. और इसका जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल अयोटा. अब वेंट्रल अयोटा जब बाहर निकलता है फ्रॉम द सिंगल वेंट्रिकल, वो डिवाइड होगा दो ब्रांचेस में, दैट इज रेफर टू एज लैटरल अयोटा. अब लैटरल अयोटा ईच ब्रांच विल फर्दर सब डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिड आर्च जो ऊपर की ओर जाएगा, सिस्टमिक आर्च जो नीचे की ओर जाएगा सप्लाइंग ब्लड टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स, एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्च जो लंग्स की ओर और क्यूटेनियस दैट मींस स्किन की ओर it is going to go and supply blood to it. अब इतने details you don't have to do about the heart, and this diagram, neither this diagram nor this diagram is given in your NCERT book. This I have just put for the explanation part of it, just to have a small idea कि sinus venosus जो हम में gradually it becomes reduced, reptiles में reduce होगा, फिर birds में reduce होगा, and in us it's also reduced into just a patch of what you have read as SA node. What is SA node? Basically it is the remnant of this sinus venosus that is so prominent in these amphibians. तो ये reduce करके हम में एक modified patch बन जाता है in the right auricle, from which acts as a pacemaker from which the cardiac impulse originates. तो तभी उसको SA node, sino auricular node बोलते हैं. Why? Because it is the remnant of sinus venosus. So don't be bogged कि इतने नाम रखने हैं, just for the explanation. कि first कि ये दो other structure जो हमने यहाँ पे बोला था, sinus venosus, triangular shaped structure on the dorsal side by fusion of 2 superior vena cava and 1 inferior vena cava. So this will be the collecting the impure blood that will go into the right auricle. फिर ventricle से क्या arise होता है? Truncus arteriosus, एक bulbous structure that is called as truncus arteriosus. जो इसका जो distal portion है उसको conus arteriosus बोलते हैं, जो ऊपर वाला portion जो है ventral aorta बोलते हैं, जो बाहर निकल के branch होगा 2 branches में. That's all about the heart of the frog. So that is what we said here कि truncus sinus venosus कहाँ से होगा? On the dorsal side of the heart कि 2 superior vena cava and 1 inferior vena cava will fuse to form a wide chamber that is called as sinus venosus. और वो कहाँ open करेगा? Into the right auricle. It receives impure blood from all parts of the body of the frog. फिर जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट वी सेड एज ट्रंकस आर्टेरियोसस, वो क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो अराइज करेगा फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल एंड दैट डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स. एक तो कोनस आर्टेरियोसस है और दूसरा कौन सा है? वेंट्रल अयोटा. कोनस आर्टेरियोसस कौन सा पार्ट है? जो वेंट्रिकल्स के पास में है, एंड इट इज प्रोवाइडेड विद सेमिल्यूनर वाल्व्स एट बोथ इट्स एंड्स. सो जो डिस्टल पार्ट है दैट इज द वेंट्रल अयोटा, दैट इज द डिस्टल पार्ट जो
टू ब्रांचेस में हमने देखा, टू अयोटिक ट्रंक्स में डिवाइड होता है, और ईच अयोटिक ट्रंक किस में डिवाइड होगा, कैरोटिड आर्च में और कैरोटिड ट्रंक में, फिर सिस्टमिक आर्च जो नीचे की ओर जाएगा, और या एंड pulmocutaneous arch that will supply oxygen to the lung and the skin. Then you have blood from all parts of the body passes into the sinus venosus. Now this is, we are talking about the circulation, and then it will go into the right auricle. वहाँ से pulmonary veins from the lungs will carry oxygenated blood from the lungs to the left auricle. Then the two auricles then contract and push the blood into the single ventricle through a common auriculoventricular aperture. From there it is going to go to the conus arteriosus and then into the ventral aorta and then into the different vessels. So frogs that has two portal systems, the renal portal system that you have read and the hepatic portal system. Blood में nucleated RBCs है, WBCs है और blood platelets है. Now coming to the excretory system. Excretory system में क्या है, as usual a pair of kidneys है, ureter है, urinary bladder है and cloaca. So ureters जो है acts as urinogenital ducts because it's going to carry the sperm along with the urine in case of male frogs, and this duct is going to open into the cloaca. फीमेल्स में जो है सेपरेट होगा, यूरेटर सेपरेट है, और ओविडक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल ओपन सेपरेटली इन द सेम सैक दैट इज द क्लोइका. फ्रॉग जो है एज यू हैव रेड बिफोर excretes urea and is ureotelic. Coming to the nervous system. अब nervous system में दोनों है, neural system that is a nervous system and the endocrine glands, coordination दोनों का होता है. Prominent endocrine glands कौन से हैं जो हम में भी है, pituitary है, thyroid है, parathyroid है, thymus है, pineal body है, pancreatic islets है, adrenals and gonads है. नर्वस सिस्टम सेम पैटर्न पे जैसे ह्यूमंस में पड़ा हुआ है, मैन में पड़ा हुआ है. सेंट्रल nervous system है, that is the brain and the spinal cord. Peripheral nervous system which comprises of the nerve fibers arising from the brain and the spinal cord, that is the cranial nerves and the spinal nerves. And autonomic nervous system which comprise of these two, sympathetic and parasympathetic. So ये frog में भी है. There are 10 pairs of cranial nerves. In us कितने pairs हैं? 12 pairs we have. But in case of frog there are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. Brain यहाँ पे भी divided है, just like in man you have studied into forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain again has the olfactory lobes, paired cerebral hemispheres, दो cerebral hemispheres और diencephalon. Midbrain में optic lobes है, और hindbrain में क्या है, cerebellum and medulla oblongata. अब medulla oblongata, just like in man, will pass through the foramen magnum and will continue as the spinal cord and pass through the vertebral column. अब frog में different sense organs हैं, जैसे कि organs of touch, that is the sensory papillae, taste buds हैं जो tongue पे है, smell जो nasal epithelium में है, that is also called as Jacobson's organs, vision है, bulging eyes हैं, hearing है, the tympanum with internal ears. Vision is monocular, that means दोनों eyes अलग अलग images form करेंगे. Pore accommodation है इसमें, and it will be hypermetropic, that means long sighted in water, and myopic, that is short sighted over land. जो frogs के जो most frogs can see only at a distance, but they have excellent night vision. They are sensitive to movements also. जो ये bulging eyes हैं तो आगे भी इनको नज़र आता है, साइड में भी आता है और पीछे भी आता है. Perfect for catching insects. Any movement they see, they can see it and catch insects. और जब frog swallow करता है food को, ये it pulls its eyes down into the roof of the mouth while it is swallowing food. अब जो eyes जो है, it's covered by a nictitating membrane, so that they are protected in water. अब external ears are absent, वो तो mammals में खाली है, और only tympanum can be seen externally.
अब जो ये टिम्पैनम है इसके दो पार्ट्स है, एक तो मिडिल एयर है और इनर एयर है। मिडिल एयर और द टिम्पैनिक कैविटी में यूस्टेशियन ट्यूब्स है जो हमेशा ओपन रहते हैं इन द बकल कैविटी, और जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन इंटरनल जो है, जो मिडिल कैविटी में है, उसमें ऑडिटरी कैप्सूल है और उसमें दो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है, हमें तीन है, दैट इज द malus, incus and the stapes। इसमें एक rod shaped structure है that is called as columella oris, and stapes that is connected to the oval window or fenestra ovalis. Now coming to the male reproductive system. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अभी देखा था कि इट acts as both for passage of urine as well as for sperm, so it is also called as urinogenital system। तो यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है कि एक पेयर ऑफ ओवॉइड येलोइश टेस्टीज है, उसके ऊपर फैट बॉडीज होंगे, दोनों साइड्स में है, दैट इज प्रेजेंट अटैच टू द ईच किडनी। यहाँ से भी अटैच टू द किडनी है, दिस इज होल इज द किडनी, ये टेस्टीज है, ओवॉइड टेस्टीज। और जो इट इज अटैच टू द किडनी बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अटैचिंग द टेस्टीज टू द किडनीज दैट इज कॉल्ड एज मेसोर्कियम। अब भीतर में टेस्टिस में क्या होंगे, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं ना, सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ लीड करेंगे, एक नेटवर्क में, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रिटी टेस्टिस। इस नेटवर्क, इस रिटी टेस्टिस से क्या अराइज होंगे, फाइन ट्यूब्यूल्स, 10 to 12 fine tubules, that is called as vasa efferentia. Vasa efferentia will lead into these canals which is called as the Bidder's canal. So this is the Bidder's canal. फिर वहां से निकल के कहाँ जाएंगे, into this urinogenital duct। लेकिन इसके ऊपर वाले पोर्शन में the urinogenital duct is swollen यहाँ पे, that is called as seminal vesicle, और यहाँ पे sperms will be stored. So this is called as ureter, or it is also called as urinogenital duct, and that is going to open into the cloaca. From here also, this is the cut part of the this the kidney where they are showing the Bidder's gland. This is the whole kidney where these vasa efferentia are visible here entering into the Bidder's gland, और यहाँ पे ये adrenal gland है. This is the seminal vesicle where sperms are stored, and this is going to open separately into the cloaca, and then both the urine and the sperm will be passed out to the exterior through the cloacal aperture. This is the urinary bladder here. So if you are asked about the pathway of the sperms, अब pathway of the sperms क्या होगा, semniferous tubule से कहाँ जाएगा, रिटी टेस्टिस में, फिर कहाँ जाएगा, वाजा एफ्रेंशिया में, फिर कहाँ जाएगा, बिडर्स ग्लैंड कनाल में, सॉरी बिडर्स कनाल में, फिर कहाँ जाएगा, सेमाइनल वेसिकल में, फिर यूरेटर और द urinogenital duct, and then the cloaca. So this is the passage of the sperms in the male reproductive system. So coming back to the text, we said that the male reproductive system is also called as urinogenital system. It consists of a pair of yellowish ovoid testes present on the upper part of the kidneys and are attached to it by a double fold of the peritoneum called as mesorchium. Testes has a number of seminiferous tubules where sperms are produced, which opens into a network called as rete testes. Now from there 10 to 5 ducts will arise, and these are called as vasa efferentia. Vasa efferentia will enter the kidneys on each side and open into the Bidder's canal, and from here sperms are passed into the ureter or the urinogenital duct by means of a transverse collecting duct. Proximal part of the duct is swollen to form the seminal vesicle for storing sperms and opens into the cloaca. And the cloaca is a small median chamber used to pass the fecal matter, because the alimentary canal opens here, urine and the sperms to the exterior. Coming to the female reproductive system. So female reproductive system में भी pair of ovaries हैं दोनों side में over near the kidneys, मगर जैसे कि male reproductive system में है there is a connection
between the testes and the kidneys. यहाँ पे कोई functional connection नहीं है between the ovaries and the kidneys. So they are separate though they are near each other. Ab they are very large, these ovaries, and they produce large number of eggs. So larger number of eggs, where they are shed, they are released in the body cavity, in the abdominal cavity. वहाँ से ये eggs कौन pick up करेगा? These tubules, these coiled tubules on this side, that is the oviduct. So oviduct में ऊपर एक ciliated funnel है, funnel shaped structure है, that is called as oviducal funnel. So oviducal funnel से eggs जाके कहाँ जाएंगी? Through these oviducts which is highly coiled here, और यहाँ पे जो proximal distal part जो है that is swollen and that is called as ovisac, और यहाँ पे the eggs will be stored, and these ovisacs will open separately दोनों side से into this common chamber that is the cloaca, and from there the eggs will be shed into water to outside, where the male frog will shed the sperms and fertilization is external in water. So what we said, a pair of ovaries present near the kidneys and there is no functional connection with the kidneys, जैसे कि male में हमने देखा. Each ovary produces a large number of eggs which are shed into the body cavity. From the body cavity, the eggs are picked up by the oviducts which has a ciliated oviducal funnel, जो अभी हमने यहाँ पे देखा. And in the posterior region, each oviduct has a broad egg storing region called as ovisac, which opens into the cloaca separately. Mature female lays about 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization is external and occurs in water. Development is indirect because it involves a tadpole stage which undergoes metamorphosis to form the adult. Last part of this is the economic importance. Frogs beneficial हैं because they eat insects and hence help in protecting the crops. They also maintain the ecological balance because they serve as an important link of food chain, food web in the ecosystem. और कुछ countries में जो है, जो muscular legs है जो frog के, they are used as food by man. So that's all about in